Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Hi. सुपर सुबोध. अरे इतने दिन बाद सुबोध, कहाँ हो, कैसे हो? गुड टू सी यू. अमित प्रजापति, अमोल, अनुज, अनुरोध, अविनाश, अभिषेक, बीचल, बीरेंद्र जैन, दीपाली, दीपालो खाजरा, प्रिया, हितेश सिंगला, इमैनुअल, संतोष, इंदरपाल, ईशपुरी, कमलेश मेहता, कार्तिकेयन, किरण, वेलकम. Hi, Mahendra Reddy, Makrand, Mangesh, Manju, Neeraj Mittal, Neeraj Rathi, Prajakta, Prashant, Pritam, Priya, Rajeshwari, Rashmi. Welcome, welcome. Yash Desai, Yash Shah, Swagatika. Welcome. Shailendra Gupta. Hi. All right. Okay. So let's get started. So today, just a second. Let me just see. Okay. So how many times? So today we are going to talk about that part of the human mind of an investor who is continuously comparing the performance to an invisible benchmark, to a completely invisible benchmark. Just a second. There is some dirt on the lens. Give me 1 second, please. Just a second. Yeah, this is better. So they are continuously comparing the performance to an invisible benchmark. देखो, ऐसा तो बहुत बार हुआ होगा. You can write in the chat box how many times it has happened कि you have created a very decent portfolio. Portfolio आपने बहुत अच्छा बनाया है. Fund selection was not wrong. Allocation आपने जो किया है, it was not random. And the client has not lost money. Okay? Still the client says गोल्ड ज़्यादा चला है, या प्रॉपर्टी में डालते तो शायद ये होता. मेरे फ्रेंड ने ये इसके बारे में बात की, निफ्टी इतना चढ़ गया है, मेरा पोर्टफोलियो इतना नहीं चढ़ा है. ऑल ऑफ दैट. हाउ मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड? हुआ है कभी कि यू आर कंटिन्यूसली गेटिंग कंपेयर्ड विथ सिचुएशंस एंड स्टफ विच इज नॉट द मेन स्ट्रीम. ओके, हुआ है. ओके, सुमन आपके साथ हुआ है, ममता मेनी टाइम्स, सुबोध वैद्या, दीपाली. ओके ओके. नाउ टुडे इज अबाउट दैट. ओके, टुडे इट इज अबाउट दैट. टेल मी, do you think is the client actually reviewing his portfolio, or is he comparing it with some imaginary perfect investment in his mind? क्या करते होंगे? What do you think the client is actually doing? Is he actually comparing कि एक imaginary portfolio है जिसके साथ आपका comparison चल रहा है? That is the hidden problem. You know, and it is a problem which is hidden. वो हमको समझ नहीं आ रहा है. Okay? Yes, नीरज, correct. रिटर्न तो दिया है 33%, स्टिल बोलता है क्रिप्टो ये है. That is a hidden problem. Most clients don't judge returns objectively. They judge returns against whatever has recently done well. आज ये गोल्ड हो सकता है, कल वो प्रॉपर्टी हो सकता है, कभी वो स्मॉल कैप हो सकता है, कभी वो क्रिप्टो हो सकता है, कभी वो डायरेक्ट स्टॉक हो सकता है, कभी पीएमएस हो सकता है, अनलिस्टेड हो सकता है. एंड यू नो द फनी पार्ट क्या है? दिस इमेजिनरी बेंचमार्क हैज़ नो रिस्क, नो टैक्स, नो वेटिंग पीरियड, नो रॉन्ग टाइम. कभी भी उठा के किसी के इमेजिनरी पोर्टफोलियो के साथ कंपेयर कर लो, रिटर्न टू रिटर्न कंपेरिजन हो जाएगा. सो द एडवाइजर एंड्स अप डिफेंडिंग ए रियल पोर्टफोलियो अगेंस्ट ए इमेजिनरी पोर्टफोलियो. ये तो बहुत नाइंसाफी है. इट्स अ वेरी अनफेमिलियर फाइट. And this is why many review meetings becomes very frustrating.
The advisor is talking about goals, asset allocation, long term structure, बट क्लाइंट के दिमाग में उस समय क्या चल रहा है? अरे भाई, मेरे दोस्त को तो ज़्यादा मिला है, माई फ्रेंड हैज़ मेड मोर. एंड टुडे सेशन इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे. कोई दिस इज द स्किल. ये इमेजिनरी हिडन जो पोर्टफोलियो है, ये जो हिडन बेंचमार्क है, इसके बारे में. कोई फंड सिलेक्शन या मार्केट के प्रेडिक्शन के ऊपर नहीं है. हाउ टू मैनेज द client's invisible benchmark, because many portfolios don't fail financially. Okay, हम लोग फेल तब करते हैं जब क्लाइंट इमेजिनरी पोर्टफोलियो के साथ कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. ओके, गिव मी 1 minute. लेट मी सी वेदर द प्रेजेंटेशन डेक इज रेडी. अगर रेडी नहीं है then I will just keep talking and it is ready. Okay, perfect. Give me 1 minute. Yes. Can you please confirm it's visible? The invisible benchmark? Visible है? Okay, thank you, Hitesh. All right, thank you very much. Why clients are unhappy even when their portfolio is doing reasonably well? Okay, so reality क्या है? आपने बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया है. Portfolio is not bad. The client has not lost money. The plan is broadly on track. But discussion उस दिशा में चला गया. Gold ज़्यादा दे रहा है, crypto ज़्यादा दिया है, property ये क्या है. So the client is actually not truly reviewing the portfolio. Okay? They are only getting compared based on return. He is not comparing the portfolio in terms of risk. That person, yes, invisible portfolio is becoming visible now. The client is not portfolio comparing on volatility, tax, some delay in investments, liquidity issues, timing errors. ये सब कुछ नहीं है. वो सिर्फ return to versus return का. And in their mind, this imaginary benchmark is a perfect benchmark. Is a perfect benchmark. And ये perfect imaginary benchmark के against आपका judgment हो रहा है. How good or bad you have been. Okay, देखो, the biggest dangerous or the most dangerous benchmark is not Nifty. It is this imaginary investment the client thinks he should have made. यही उसके दिमाग में चल रहा है कि मुझे यही करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया है. उनके देयर आर रूट प्रॉब्लम क्या है ना. एक है एक्चुअल पोर्टफोलियो, दूसरा है इमोशनल पोर्टफोलियो. ओके, सो दैट इज द सोर्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. As an MFD, we are managing the first portfolio, but we lose clients because of the second. We lose clients because of the second. How many of you agree to this? पैसा तो हम लोग पहले वाले के मैनेज कर रहे हैं, बट क्लाइंट्स अगर लॉस होता है, ये जितना बातचीत हो जाता है क्लाइंट्स के साथ, it's because of the second one. This is the problem. So today we will try to see इसके बारे में क्या कर सकते हैं. Okay. देखो, उनके मन में ना कुछ रिग्रेट होता है हाइंडसाइट पे कि ये करना चाहिए. ये सब चीज़ ना हमेशा हाइंडसाइट होता है. इट इज़ नॉट फॉरवर्ड लुकिंग. I should have bought that stock instead. This is basically some dinner table conversation, social gossips के कारण होता है. Peer come. My brother-in-law invested in crypto and got 80% return. He invested in gold and silver, got 90% return. Okay. Basically, it is always a comparison of a full portfolio versus one particular topical, thematic, hot sector for that moment. Okay. And all the reviews that you are trying to do will fail. Okay. All the reviews that you will fail because you are trying to compare logic with emotion. Okay.
सो गोल्ड में डालते तो बेटर होता. मेरे फ्रेंड्स ने बहुत बनाया. ओके, बोलना क्या है? अगर आप बोलोगे कि दिस इज ए नॉन प्रोडक्टिव एसेट, इफ यू लुक एट द 10 year CAGR, इट हैज ओनली आउट परफॉर्म ब्ला 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 ब्ला, बस द क्लाइंट विल फील अनहर्ड. क्लाइंट को लगेगा आप उनकी बात सुन नहीं रहे हो. बोलना क्या है? यू हैव टू वैलिडेट द इमोशन. आई हियर यू. इट फील्स लाइक वी हैव मिस्ड अ बिग रैली देयर. Before we look at the allocation, tell me, are you worried about your plan or does it just like we missed out on a good opportunity? पूरे पोर्टफोलियो को एक साथ कंपेयर ना करें, वैलिडेट करवाए, आइडेंटिफाई द इनविजिबल बेंचमार्क फर्स्ट. ओके, द क्लाइंट हैज टू रियलाइज द क्लाइंट इज नॉट जस्ट सेइंग गोल्ड इज बेटर, दे आर सेइंग आई फील आई मिस्ड समथिंग. देयर आर 5 इनविजिबल बेंचमार्क्स. एक होता है नेबर बेंचमार्क, hindsight benchmark, comfort benchmark, status benchmark, and peak return benchmark. जब भी कंपैरिजन होगा ना, ये पांचों के 5 में से कोई एक हो सकता है. माय फ्रेंड मेड मोर मनी, पहले पता होता तो गोल्ड ले लेते. एफडी में कम से कम टेंशन नहीं होता. एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन अनलिस्टेड एंड रियल एस्टेट, आई शुड हैव डन इट, बट दैट स्पेसिफिक फंड गिव्स अ 25. सो क्लाइंट्स डोंट रिव्यू पोर्टफोलियोज अगेंस्ट इंडाइसेस, दे रिव्यू देम अगेंस्ट दिस इंटरनल नैरेटिव्स. अगर कोई नेबर बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन हो रहा है, ओके, देन द क्लाइंट इज फोकसिंग ऑन वन सक्सेसफुल स्टॉक और सम एट ए सोशल गैदरिंग एंड सो ऑन विद ए जीरो कॉन्टेक्स्ट. ओके, आपकी जिम्मेदारी है डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मल्टीपल एसेट क्लासेस, डिजाइन फॉर लाइफ लॉन्ग एंड ऑल दैट. We are comparing your complete diversified plan with someone else's one successful story. That comparison is not fair to your financial security. याद रहेगा ये लाइन? Sir, we are comparing your complete diversified plan with someone else's one successful story. That comparison is not fair to financial security. Hindsight benchmark. Sir, hindsight makes every missed opportunity look simple. But before it worked, the risk was also real. We chose safety over luck. Hindsight makes every missed opportunity look simple, but before it worked, the risk was also real. We chose safety over luck. Comfort benchmark. Sir, FD gives emotional comfort. Equity gives long-term growth. Both have completely different roles in your financial plan. Status benchmark. Sir, we should not build our portfolio to match conversations. We should build it to match your life. सब लोग equity unlisted में कर रहे हैं. We should not build your portfolio to match conversations. We should build it to match your life. Benchmark number 5. Benchmark the peak return. Remind the client that the hero fund doesn't carry their entire responsibility. The portfolio carries their goals, taxes, and liquidity. Most clients, remember, most clients' complaints are not return complaints. They are comparison complaints. They are comparing one with the other. आपको 33 मिला है but दूसरे ने 80 दिया है. Okay, so bring out the benchmark. So when they say returns are low, what are you comparing this with? Always bring out the benchmark. Always ask for the comparison. Second, every asset class has a different role in your plan. Explain the role difference. Definitely neutralize the hindsight. After something works, it feels obvious. Before it worked, the risk was real. Okay? Connect back to the goal. Is this portfolio failing your goal or just looking weak versus something recent? Hold the structure. We can definitely review, but we should not disturb the structure because another asset class is temporarily popular. Okay, so when you say returns are low, what are you comparing with? Always bring out the benchmark in the conversation. Before you defend your performance, ask the client, sir, when you say returns are low, what are you comparing this with? This single question forces the client to voice their invisible benchmark. Okay? And always pause for 3 seconds after asking this question. Let the client reveal what they are thinking about.
Don't explain first. Identify the comparison first. Okay. The first you have to pause. Stop the defensive technical explanation. Naturally, we will try to be technically correct. Do not try that. Shift the power dynamic by asking a diagnostic question. Force the client to admit if the problem is a failure of the plan or just a case of FOMO. Reiterate that the portfolio is a structural engine for life, not a ticket for a short term horse race or something. Okay? What does your client actually compare your portfolio returns with? क्या होता है? FD. Remember, your client is not comparing with just one benchmark. He's comparing with whatever performed best recently. From today, let us all take a pledge and defend the fund first. Ask compared to what? Because a client's dissatisfaction often begins when he stops looking at his own plan and start looking at someone else's outcome. Manage the comparison. You will manage the regret very well. It will ensure peace of mind. All the best. Before we move ahead, the portfolio fails emotionally when the client compares it with the wrong story. All the best, everyone. Have a great day ahead. Fantastic. And see you tomorrow exactly at 10:10. All right? Take care and bye-bye. All the best. Bye-bye.